Good evening, everyone. Welcome back to Spoken English on Exampur channel. I'm your host and trainer Vishal, and I hope you guys are doing great. It's a great evening and good to see you, Vikram Nuroji. Good evening, dear. All right. We have very less students as of now waiting to watch the class, I guess. I have arrived a little earlier today. आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, शायद इसीलिए बच्चे अभी तक नहीं आए हैं. That's perfectly fine. चलिए तो बात कर लेते हैं कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं. Let's have look at the index of today's lesson. What are we going to cover today? हम आज क्या करने वाले हैं? श्वेता जी गुड इवनिंग, प्रीति जी नमस्कार. चलिए तो देख लेते हैं आज हम क्या करने वाले हैं. Let's have a look at it. So we're gonna do the word of the day today. आज का शब्द हमारा रहेगा sedentary. Very frequently spoken and heard word sedentary. Sedentary बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश में. ठीक है, तो sedentary आपको पढ़ाएंगे आज. sedentary क्या होता है? देन फुल ऑफ बीन्स इसी का अपोजिट है, इसका एंटोनिम्स है. तो फुल ऑफ बीन्स एक ईडियम्स है ना. ईडियम्स एंड फ्रेज आपने पढ़ते हैं हम इंग्लिश में. ईडियम्स एंड फ्रेज मुहावरे जो है वो मैं पढ़ाता रहता हूं आपको, तो मुहावरा भी पढ़ेंगे आज. एंड देन वील हैव द टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज sports. It's all about sports today. So what we're going to chat or discuss is about sports. आज हम sports के बारे में कुछ आपसे बात करेंगे. देखिए इस क्लास का मोटिव है स्पोकन इंग्लिश, इसीलिए मैं कोई ना कोई टॉपिक लाता हूं ताकि मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूं, कुछ आपको रीड कराऊं, so that you can improve your English. So what you guys should do is, after watching the videos, please try to answer the questions that I put in. Okay, I always have some questions in my PPTs, and I always discuss some questions and topic. So what you should do after the class is you should also speak. Try to speak few sentences like me. Okay. Abhi Roy ji, good evening. Simran Rathore ji, good afternoon. Abhi Roy, Jai Hind bacha, train journey. Good evening, sir. Good evening, bacha. All right. So what we're going to do today is sports. So I have written some names of the games here, and then I've put some questions here so that you guys can also practice after the class. You can ask these questions to yourself and try to answer. I'll also answer these questions, so you can take the help from my answers and then try to frame your answers. This is how you practice, है ना. तो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस आप कैसे कर पाएंगे? क्वेश्चंस की हेल्प से. इसीलिए मैं आज क्वेश्चंस लेकर आया हूं कुछ स्पोर्ट्स के ऊपर. Then I've given you hint box. कुछ adverbs मैंने यहाँ पर लिखी हैं जिनका आप यूज करेंगे इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए. So today's exercise is dedicated to spoken specific only. I'm going to answer you the questions, and I want you guys to prepare your answer, frame your answers, taking the help from my answers, and then try to speak out your answers. Try to answer the questions to yourself in front of the mirror. ठीक है, कोई नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप घर में अकेले ही मिरर के सामने खड़े होकर इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करना. एंड ट्राई टू गिव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 times. एक क्वेश्चन का कम से कम 3 बार आंसर देने की कोशिश करना, बिकॉज व्हेन यू विल गिव द आंसर फर्स्ट टाइम यू विल मेक सम मिस्टेक्स, है ना. कुछ गलतियां जरूर होंगी, फिर दोबारा ट्राई करो, फिर तीसरी बार, एटलीस्ट 3 times. ठीक है, एक क्वेश्चन पर 3 बार चांस तो बनता है बॉस, है ना. लाइफ भी हमें कई चांस देती है, तो आप क्वेश्चंस को भी 3 चांस तो कम से कम दो. ठीक है. गुड इवनिंग ओमजीत कुमार जी, आगरा मंडल. जय हिंद सर. जय हिंद बच्चा. नरेश भाटी जी गुड इवनिंग. ठीक है. So that's what we're going to do today. I have some vocabulary, glossary related to sports, है ना. जब हम sports की बातें करते हैं तो कुछ words की हमें जरूरत पड़ती है, तो कुछ words मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें sedentary आप देख रहे हैं टॉप पर है, because the word of the day today is sedentary. हम आज sedentary word को हर हालत में याद करने वाले हैं. ठीक है. And then I have the quote of the day. Quote of the day पढ़ेंगे क्या है, and we'll understand it. So that's what I have today for you guys. Good evening everyone. संजू यादव जी good evening. चलिए तो start करते हैं. Let's start today's lesson from word of the day. Word of the day से start करेंगे बच्चों. आज का लेसन है हमारा word of the day. क्या होता है sedentary? देख लेते हैं. पहले तो स्पेलिंग देख लीजिए. sedentary, SEDENTARY. तो sedentary, TARY आप देख रहे हैं.
sedentary, ठीक है। एक्चुअली इंग्लिश में अक्सर ERY वाले वर्ड नाउन होते हैं और ARY वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो sedentary यहां पर ARY वाला वर्ड है तो एडजेक्टिव होता है। कई बार क्या होता है ER और ARY में ना बड़ी फाइट भी हो जाती है जी, लड़ाई कर लेते हैं दोनों, दे फाइट विद ईच अदर। तो कैसे फाइट करते हैं, लेट मी टेल यू हाउ दे फाइट, बिकॉज वी हैव सम वर्ड्स लाइक स्टेशनरी। अब स्टेशनरी की क्या दो स्पेलिंग्स हैं इंग्लिश में, STATIONERY भी होता है और STATIONARY भी होता है। सो यू हैव टू spelling of stationery and they both have different meanings and different parts of speech, दोनों की meanings और parts of speech अलग होती हैं, ठीक है। वीडियो इज कमिंग फर्स्ट एंड वॉइस इज कमिंग लेटर, ऐसा कुछ इशू हो रहा है। तो मैं हमारे सुनील भैया जी हैं टेक्निकल भैया, इनको बोल देता हूँ, दे विल चेक इट कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारे एंड से कोई दिक्कत है ये मैं चेक करा देता हूं बच्चा। लक्ष्मण कुमार जी गुड इवनिंग, एक बारी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है सुनील भैया, ठीक हो गया। Right, I think it's all right now. Please confirm me in the chat whether you are, whether the video and voice are in the synchronization. Is it in the synchronization or not? Video और voice synchronize हो गई है? सक्सेसफुली कनेक्टेड तो दिखा रहा है बट बफरिंग अभी भी हो रही है। Done? Shall we start? Okay. All right, guys. Tell me whether the video and sound are in synchronization or not. The video has been synchronized now, I guess. The sound and video are in synchronization. Please type in yes if you can watch the video properly now. Video और sound दोनों एक साथ आ रहे हैं ना बच्चा, synchronization है ना video और उसमें. Now the video and audio should have synchronization. अब synchronization होना चाहिए. सचिन मिश्रा जी ने thumbs up कर दिया है. All right, so let me move on now. Okay. So I was telling you about ERY and ARY. मैं ERY और ARY के बारे में बता रहा था बच्चों कि ERY वाले वर्ड अक्सर इंग्लिश में नाउन होते हैं और ARY वाले वर्ड अक्सर इंग्लिश में एडजेक्टिव होते हैं. So most of the time the ARY words are adjective and you know that adjectives describe noun. Adjective noun और pronoun की विशेषता को बताते हैं. For example ये जो stationary word आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है अनमूवेबल, जो हिले ना, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ. सीडेंटरी का ही सिनोनिम होता है एक्चुअली स्टेशनरी. ओके, व्हाट अ ग्रेट वर्ड वी गॉट, है ना. देखो जो ऊपर वाला स्टेशनरी है ना ERY, वो तो बच्चों की स्टेशनरी होती है ना, पेन पेंसिल बुक्स, उसको बोलते हैं. ठीक है, तो नाउन हो गया, नेम ऑफ थिंग्स आर नाउन. तो स्टेशनरी ERY वाला तो नाउन होता है. ARY वाला जो है ना वो एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है जो मूव ना करे, सीडेंटरी. ठीक है, सीडेंटरी वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ये उसी का सिनोनिम हो जाता है बच्चों. सीडेंटरी का ही
सीडेंट्री का ही सिनोनिम होता है, सिनोनिम मतलब सेम, है ना। सिनोनिम होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब भी होता है जो मूव ना करे, जो इनएक्टिव रहे, जैसे स्टेशनरी स्टार, है ना। यू मस्ट हैव हर्ड और रेड दैट द सन इज अ स्टेशनरी स्टार। सूरज जो है वो एक स्टेशनरी स्टार है, मतलब जो हिलता नहीं है, ठीक है। और सीडेंटरी का मतलब भी क्या होता है, जो इनएक्टिव है, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ सिटिंग डाउन। स्पेशली सीडेंटरी वर्ड का यूज आप जब करते हैं जब आप इस तरह के काम में होते हैं जहां आपको मूव ही नहीं करना पड़ता, बैठे हुए हैं, समोसा खा रहे हैं और पेट फुला रहे हैं, ठीक है जी। तो ऐसा कोई वर्क अगर आप करते हैं जिसमें आपको सिर्फ बैठे रहना पड़ता है, जिसमें आप एक्टिव नहीं है, तो उसे सीडेंटरी बोलते हैं। तो सीडेंटरी का ही सिनोनिम हो जाता है स्टेशनरी, जो मूव ना करे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है ना। तो सीडेंटरी वर्ड आज का हमारा है, बिकॉज वी आर डूइंग द टॉपिक स्पोर्ट्स टुडे। तो स्पोर्ट्स में सीडेंटरी वर्ड का आना बहुत ही जरूरी था। इट्स अ मस्ट हैव वर्ड इन योर डिक्शनरी। श्वेता दुबे जी, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हासमुद्दीन अंसारी जी, गुड इवनिंग। सीधू कुमार सिंह, गुड इवनिंग। नरेश भाटी जी, यस, सीडेंटरी वर्ड कर रहे हैं बच्चा। सीडेंटरी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सिटिंग डाउन होता है, जो बैठे रहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है, देखिए, जिसमें व्यक्ति देर तक बैठा रहे, सक्रिय ना हो। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही कॉमन, इट्स कॉमनली एंड डेली यूज सेंटेंस, बहुत लोगों के मुंह से आपको सुनने को मिलेगा इफ यू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू कन्वर्स इन इंग्लिश। सीडेंटरी लाइफस्टाइल या सीडेंटरी जॉब। सीडेंटरी लाइफस्टाइल क्या होता है, जिसमें आप बस बैठे रहते हैं। काउच पोटैटो भी बोलते हैं इंग्लिश में ऐसे लोगों को। लेट्स लर्न दिस फ्रेज एज वेल, नाइस फ्रेज आई गॉट, काउच पोटैटो, है ना। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, काउच पोटैटो भी बोलते हैं, पोटैटो, काउच पोटैटो। तो काउच पोटैटो होते हैं वो लोग जो बैठे रहते हैं सोफे पे। काउच होता है ना, बड़ा सा मोटा सा सोफा होता है, बस उस पे बैठे रहते हैं और मोटे हो जाते हैं, खा खा के इनएक्टिव होते हैं। सो काउच पोटैटो भी बोलते हैं इसको, सीडेंटरी, जिसमें आप बैठे रहते हैं। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से क्या होता है, यू बिकम फैट, आप मोटे हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आप बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। तो आज हम सीडेंटरी वर्ड याद करने वाले हैं, और आप देखिए, ढूंढिए आपके आसपास कौन ऐसा व्यक्ति है जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करता है। तो उस व्यक्ति के वजह से आपको आज ये वर्ड याद होना जा रहा है, ठीक है। सो प्लीज नोटिस अराउंड यू द पर्सन who's always sitting, doing nothing, just sitting, watching television, eating. So you can use the sedentary lifestyle word for him. You can use the couch potato for him. ठीक है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन। इसी का जस्ट अपोजिट एक इडियम आज आपको याद करा रहा हूं। इसको बोलते हैं फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ये दे वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुजियास्टिक, ठीक है, बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होते हैं। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ वी वर यंग एंड फुल ऑफ बीन्स। तो लाइफ जो है वो कैसी थी, जब हम बहुत यंग होते हैं तो हम क्या होते हैं, फुल ऑफ बीन्स होते हैं, मतलब हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, हम बहुत एक्टिव होते हैं, फुल ऑफ बीन्स। वैसे भी बीन्स खाने से आपको प्रोटीन मिलता है, मसल स्ट्रांग होती है, इसीलिए फुल ऑफ बीन्स को आप बीन्स की मदद से याद कर सकते हो। हालांकि यूएस में इसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाता है। यूएस में इसका मीनिंग होता है नॉट ट्रूथफुल, जो सच ना हो, फुल ऑफ नॉनसेंस, जिसमें कोई सेंस ना हो, जो ट्रूथ ना हो। बट इसका प्राइमरी यूज फुल ऑफ बीन्स का आप इंग्लिश में देखोगे तो वो एनर्जेटिक या एंथुजियास्टिक के लिए ही होता है। सो सीडेंटरी एंड फुल ऑफ बीन्स आज आपको याद होने जा रहे हैं पेयर्स में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। All right, look at the picture, discuss the questions and write down keywords. All right, I'm going to give you some questions today. I'm going to give the answers as well so that you can practice the same questions and try to give the answers using my opinion, using my words and lines, using some words that I'm sharing here so that you have something to talk about. Especially when you do not have anyone at your place to talk. So you have to speak
in English to yourself in front of the mirror. So I'm giving you some question, I'm giving you some stimulus, है ना? Stimulus क्या होता है? जो आपको प्रोवोक करेगा कि हाँ चलो थोड़ा अंग्रेजी बोलते हैं. तो शीशे के सामने खड़े होकर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेना, ठीक है? Here you can see some names of the games: skiing, hockey, weightlifting. Weightlifting आपको पता होगा वजन उठाने वाला खेल होता है. Wrestling, fighting होती है. Rowing होती है वो जो बोट में रोइंग करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? Racing, boxing आपको पता है. Now my first question is, which game does each of these sportsmen play? आपको बताना है कि ये जो दोनों स्पोर्ट्समैन हैं ये कौन सी गेम खेलते हैं, है ना? विच गेम का मतलब हो गया कौन सी गेम. तो कौन सी गेम खेलते हैं जी ये? तो देखते हैं जरा ये कौन सी गेम खेल रहे हैं. सो देखिए आपको आंसर कैसे देना है, कैसे आंसर देंगे आप? तो आप बोलेंगे listen to me and then you can do the same thing after the class in front of the mirror and try to speak few sentences in English. Okay, so the picture on my left side belongs to one of the greatest batsmen of Indian cricket team. He plays amazing cricket. I love watching his batting and he's fondly called a skipper, है ना? धोनी को fondly called का मतलब प्यार से इसको skipper भी कहते हैं, हालांकि skipper एक technical term भी है sports में, ठीक है? So this is how you will introduce the picture. There are some examinations even where you will be given a picture and the examiner will ask you to describe what's happening in the picture. So I'm giving you the specimen. नमूना दे रहा हूँ आपको. Specimen का मतलब होता है नमूना. नमूना दे रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्स भी ऐसे होते हैं, especially the IELTS और TOEFL exams. IELTS और TOEFL एग्जाम होते हैं बच्चों जो बाहर जाने के लिए होते हैं. So if you're preparing your mind to go outside and study and to go outside and work, so you better be working on your English, क्योंकि IELTS और TOEFL एग्जाम होता है, आपको वो एग्जाम देकर ही बाहर जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, या आप अगर बाहर जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो भी आपको IELTS और TOEFL देना होता है. I'll come up with one video on IELTS and TOEFL. एक वीडियो बनाऊंगा IELTS और TOEFL पे, पूरा बताऊंगा आपको क्या होता है, ताकि अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो you better be preparing your mind and preparing English, because they'll test all the 4 areas of English. वहां पर आपका listening, writing, speaking, reading चारों सेक्शन का टेस्ट होता है. और डिटेल शेयर करूंगा आपके साथ, and they'll do this with you. They'll share a picture with you and they'll ask you to describe the picture. Okay, so that's how you need to describe. On the right hand side, the man that I see sitting and concentrating on the chess board is Vishwanath Anand. Again, one of the greatest chess player of India. He is the champion when it comes to chess. He has won several gold international medals and we are proud to have him. ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अच्छी अच्छी लाइंस बोलकर इनको इंट्रोड्यूस करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है क्लास के बाद. ठीक है, क्लास को ध्यान से सुनना so that you can also use some of the word and some of the lines that I am speaking. जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं उनको यूज करते हुए अपने सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे. All right, let's move on to second question. My second question is, which one of them do you admire the most? Why? Admire का मतलब होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, आप पसंद करते हैं, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, और क्यों, ऐसा क्यों है? So let me share my answer with you. Personally, I like Mahendra Singh Dhoni. I admire Mahendra Singh Dhoni. The most important quality that this guy has is the patience, the calm, the serene that he has. He always stay cool. That's why he's fondly called Mr. Cool as well. Whatever the circumstances are, whatever the situations are, he never loses his cool. He never loses his calm. He's always composed. He's always calm and composed. That's the best quality I like about him. This is why I admire him, because whenever I have ups and downs in my life, I always recall MS Dhoni, because in most of the matches I've observed him that even in the matches where you need 6 runs on one ball, he's the guy you can trust on. So I want to
become like him. That's why I admire him, that people should have expectations from you that you can do and you can get away and you can win the situations in your real life. That's what I try to become. Okay, तो ऐसा कुछ बोलने की, आप बनाने की कुछ कोशिश करिए. All right, let's move on to my next question. My next question is, some of the sports are not as popular as others. कुछ sports ऐसे हैं जो उतने popular नहीं है जितने कि दूसरे sports हैं. Why do you think some of the sports have fewer followers? आपको क्यों ऐसा लगता है कि कुछ sports ऐसे हैं जिनको बहुत कम लोग follow करते हैं? Well, my take on this question is because of the resources the people have, I guess. Because see, I remember during my childhood, I did not have opportunity to play any other sports except cricket, isn't it? हमारे पास resources ही नहीं थे. बचपन में हमारे को बस एक ही गेम खेलने का मौका मिलता था, and that was cricket. ठीक है? Since there was no appreciations and no opportunity from the school end, especially if we talk about government schools, there's no opportunity for students to play any other games. But now we can see some changes in the government sectors, in the government schools, that games are promoted now. So yes, we can say now all the games are becoming a little more popular than the earlier time. है ना? अब थोड़ा सा और गेम्स में भी आपने देखा होगा पॉपुलैरिटी आने लगी है, राइट? And second thing is about branding. I think the game cricket in India has been branded so well by the BCCI that no other game can compete cricket. BCCI ने इतना अच्छा एडवर्टीजमेंट, इतना अच्छा लेवल पे प्रमोशन क्रिकेट का करा है, ब्रांडिंग इतनी अच्छी करी है कि और कोई गेम उसके आगे नहीं टिक पाए. See, it's all about making brand, right? You buy lots of expensive clothes and shoes just because the company has branded itself in the market. They have created the credibility, among their customers. है ना? उन्होंने विश्वास बना लिया है. So branding is also one of the factors. So lack of resources is one reason that cricket became popular or other games could not become popular. And second is branding. That's my take on these questions. Please take the help of sentences in the words and the opinion that I'm giving and try to frame your answers in front of the mirror. That's how you will learn speaking. क्योंकि बोलने के लिए बोलना तो पड़ेगा. You have to speak in order to learn speaking. Right? Okay. Shweta Dubeji, you can choose any other sports or any other, player that you watch. And if you guys do not watch sports, please watch it for the sake of personality development. Okay? Even I don't like sports much, to be frank with you. Even I don't like sports, but I watch sports sometime just to have the knowledge of how the game is played, what are the players, what is happening, because you need to be updated, and that's for your personality development. So please try to have updates of some sports. That will help you in your personality development. ठीक है? Okay. So my next question is, how often do you play the sports games you like? आप कितना frequently खेलते हैं? देखिए, often का मतलब होता है कितना frequently कोई काम आप करते हैं, कितनी बार आप वो गेम खेलते हैं जो आप पसंद करते हैं. To be honest, I hardly play any sports because I'm a working professional. I work for 8 to 9 hours. I take 7 to 8 classes daily, so I hardly have time or energy to play any sports. But yes, I do exercise daily. I do yoga for 1 hour daily. That's my take. That's my answer. Please make your answers in front of the mirror and try to speak few lines. That's what speaking is all about. That's you learn. That's how you learn English speaking. I have given you questions. Now you need to answer them in your own words in front of the mirror. All right. Let's move on to next questions
or the next slides. Okay, I've given you some adverb here so that when you answer these questions, you have some adverbs here like every day, I play every day, usually, mostly, champion, run, exciting, national sports hai, hockey is our national sports, competitive, you need to be a competitive player. Okay, adventurous, कुछ games adventurous होती हैं like racing is an adventurous game. Action होता है every evening, winning. So you may use these words to answer the following questions. Okay, I'll be really quick in answering the questions, and I want you guys to answer the questions in front of the mirror after the class, after watching the video. Okay, first question: which sports programs do you watch most often? So I watch cricket most of the time when I have time. The condition applied here, asterisk. Okay. So whenever I have time, and if the match is between India and Pakistan, obviously I would love to watch. So I watch cricket like once a month or something. है ना, ऐसे आंसर देंगे ना, महीने में एक बार, तो क्या बोलेंगे? Once a month. ध्यान रखना बच्चों, इन नहीं बोलना होता है, once in a month नहीं बोलते हैं, once a month, ठीक है, या twice a month, या twice a week, है ना, हफ्ते में 2 बार, महीने में 1 बार. So through this lesson I'm also trying to teach you some adverbs of time, है ना, कुछ adverb बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप इन वर्ड्स को यूज कर सकें. ठीक है, तो मैं महीने में 1 बार क्रिकेट देखता हूं. So I watch cricket once a week. That's how often I watch cricket. All right. Second question: what do you like and not like about them? तो आपको बताना है कि जो फेवरेट प्लेयर्स हैं या गेम्स हैं उनके बारे में आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है. I like cricket. I like to see player batting and bowling and fielding, but I found sometime cricket a sedentary game. Okay, when they play test matches. Oh my God. I don't understand how people bear them, how much patience they have, where the hell they get the patience from. Because test matches are like they're playing and they just played the ball. Tick. The bowler works really hard. He runs at least 200 meter and then he throws the ball, and the batsman tuck just played the ball. So that's what I don't like about cricket. I don't like test matches because they're bored, they're sedentary, है ना, inactive है, sedentary game हो जाता है. All right, try to use the word sedentary because I'm full of beans. मैं बहुत energetic हूँ. So I don't like sedentary game. I don't like sedentary lifestyle. We're gonna learn the word today. Sedentary और full of beans अच्छे से याद हो जाना चाहिए आज. Second question. Third question. Which sports programs do your parents like to watch? Oh hell, my parents do not watch any sports. For that matter, they don't like any sports. They always watch bhajans and kirtan. That's all about my parents. Okay. Good evening, Dhanraj ji, Sachin Mishra ji. You also watch cricket? I do, but I watch cricket like once a month or whenever I have some great matches, whenever we have great matches like India and Pakistan. Anu Sharma, I don't like games. No, I like games. If I get a chance to play cricket, I would love to. I enjoy playing cricket, though I'm not very good at cricket. ठीक है, good at होता है, ध्यान रखना, good in नहीं होता. Whenever you talk about skills, जब भी आप किसी skills की बात करेंगे, कौशल की बात करेंगे, तो बच्चों good at बोलना है, good in नहीं, है ना. जैसे I am good at cricket, I am good at English, ऐसे बोलते हैं. Okay, let's move on to our next slide. These are some words that you can use when you talk about sports. Our word of the day today is sedentary, जिसका मतलब होता है somewhat inactive, है ना, मतलब inactive state में होना. ठीक है, ट्रेनिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं आप, प्रैक्टिस करते हैं ट्रेनिंग में हम. वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज होता है. ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला, आई वर्कआउट फॉर 1 hour डेली. आई गो टू द I don't go to the gym, sorry. I do yoga. I work out and do yoga. रूटीन होता है हमारा डेली जो हम करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी को बोलते हैं रूटीन. ठीक है, हाइकिंग क्या होता है? लॉन्ग वॉक्स पर जाना.
हाइकिंग वर्ड आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफी सारी टेक्निकल स्पोर्ट्स के नाम आपको दिखाए हुए हैं, आप पीछे की वीडियोस में देखिएगा, किसी वीडियो में टॉपिक आया था आई थिंक, मैं पर्टिकुलर आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कौन सी क्लास में था वो टॉपिक, ठीक है। ओके, माउंटेनियरिंग, माउंटेन पर क्लाइंब करते हैं, सो दीज आर जस्ट सम वर्ड्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीडेंटरी, सीडेंटरी इनएक्टिव, फुल ऑफ बीन्स एक्टिव, ये दो वर्ड तो आज पक्का याद होने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर कोट ऑफ द डे। मैं हमेशा वर्ड ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे अपनी क्लास में करता हूं, सो लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम दिस कोट। ट्राई टू मेमोराइज, याद करो, ताकि जब भी आपको मौका मिले स्पीच देने का या लिखने का तो आप इनको यूज कर सकें, सो दैट व्हेनेवर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी to deliver a speech or write something, you can use such lines. These are beautiful lines. So let's read about it. Every champion was once a contender that refused to give up. Every champion was once a contender that refused to give up. आज जितने भी चैंपियन आप देख रहे हैं वो कभी ना कभी एक सिंपल कंटेंडर थे, बिगनर थे, जिन्होंने शुरुआत की, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक डिसीजन लिया लाइफ में कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, कम व्हाट में, है ना। ये इंग्लिश में एक फ्रेज है, याद कर लो, बहुत ज्यादा यूज करते हो आप लोग, पता है मुझे। हाँ, क्या है फ्रेज? ये लिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, हो गया। कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, गिव अप मत करना। जैसे इंग्लिश में ले लो, आप आज मुझे देखते हो या किसी भी और अच्छे स्पीकर को देखते हो, दैट दे आर स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज ऑफ ग्रामर। गाइज, वी वर ऑल्सो अ बिगनर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। कभी ना कभी हम भी बिगनर थे, है ना, लेकिन वी डिसाइडेड नेवर टू गिव अप। So every champion was once a contender that refused to give up. So come what may, never give up. You can learn English. You will learn English. All you need is to practice daily, watch the lectures, work hard, be curious, be inquisitive. Inquisitive word मैंने आपको पढ़ाया है, inquisitive previous videos में पढ़ाया है, इसलिए मैं repeat कर रहा हूं। Inquisitive का मतलब होता है क्यूरियस होना, है ना, एक्साइटेड होना सीखने के लिए। एंड कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप। ऑलराइट, सो विद दैट नोट आई विल टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द सेशन। सी यू at the same time, at the same on the same channel tomorrow. Till then, thank you very much. See ya.